Good afternoon everyone. मेरा नाम आयुष पांडे है and here I am going to present a review article. Alright, good afternoon. My name is Ayush and I'm here. I'm going to present topic that is a review article, basically, and it is on guide to MLOs and their various role in gene regulation. So this review article was drafted by some research scholars from Osaka University, Japan. In this, we are going to cover membraneless organelles in the cells and their function, basically, in the gene regulation. So, here's what we have for you in this list of content. We are going to cover abstract introduction to MLOs, means basically what MLOs are and their key features, functions, roles of MLOs in diseases, and future scopes. Alright, so in this abstract, the researchers basically describe the review that they have drafted. So, membranous organelles are detected in cells as dot of mesoscopic size. In eukaryotes, dozens of MLOs have been identified, including nucleolus, sessile body, nuclear speckles, paraspeckles, PML, nuclear bodies, nuclear stress bodies, processing bodies, and stress granules. MLOs contain specific protein of which many possesses intrinsically disordered reason, IDR reasons, and nucleic acid. So basically, MLOs are made up of two things, that is nucleic acid and R protein. And this is what it is written here. Many MLOs contribute to gene regulation by different mechanisms through sequestration of specific factors. MLOs promote biochemical reaction by simultaneously concentrating substrate and enzyme. Other MLOs construct interchromosomal hub by associating with multiple loci, thereby contributing to the biogenesis of macromolecules. As we know, nucleolus और जो हमारा sessile body है, तो nucleolus बहुत मेजर फंक्शन करता है राइबोसोम फॉर्मेशन में और sessile body का भी अपना रोल है स्पीसीओसोम में. तो देखते हैं आगे अभी की इंट्रोडक्शन की क्या चीजें हैं. So what are MLOs basically? So MLOs are cells contain membraneless organelles. Cells contain multiple organelles lacking surrounding membrane. That MLOs does not have that outer membrane that our cell has. Many cell organelles even have, like nucleus has membrane, mitochondria has membrane, endoplasmic reticulum has membrane. But these MLOs doesn't have that outer covering, So MLOs are basically biomolecular condensate of mesoscopic size, approximately 0.2 to 2.0 micrometer, and of various shapes, which consist of specific protein and usually nucleic acid. Many of the proteins within MLOs exhibit features of nucleic acid binding regulatory proteins, indicating that MLOs have a regulatory role in gene expression. The first reliable description of nucleolus was reported in 1830s. So before 1830s, it was Fontana who reported nucleolus, but there are no such evidence, there are no such logging in the documentation form. At the beginning of 20th century, the legendary neurobiologist Ramon Cajal discovered various MLOs in the nucleus of vertebrate cells, which are now known as Cajal body and nuclear speckles. Since then, dozens of different MLOs have been identified in the nucleus and cytoplasm of mammalian cells. Alright, so features of MLOs. MLOs are formed with phase separation prone protein
and characteristic domain and RNA is interacting with them. So as I told earlier कि amylose का formation होता है वो होता कैसे कि न्यूक्लिक एसिड तो हो गई वहाँ पे और साथ ही कुछ राइबोसोमल प्रोटीन आ जाएगा और मिलके कंडेंसेशन करेंगे और उसके बाद जो है एक ऐसी बॉडी का फॉर्मेशन होगा जो आगे जाकर हमारे जीन रेगुलेशन और सेल ऑर्गेनल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. Multiple ideas contain proteins have been identified as major component of various amylose, including the nucleolus, nuclear speckles, and paraspeckles and stress granules, some of which are essential for amylose formation. Protein localization in amylose is usually dynamic. Protein move in and out and enable amylose to reversibly undergo formation or dissolution in certain internal and external conditions. So here is the overview of role in gene expression. The first described amylose, the nucleolus and sessile body are involved in the biogenesis of macromolecular and macromolecular ribonucleoprotein. These are the machinery of gene expression, namely the ribosome and speciosome. In the flow of protein coding, gene expression, amylose regulate various steps of gene expression in the nucleus, such as transcription and RNA processing and export, and in the cytoplasm, such as RNA stability and translation. Alright, so here is the picture. Basically, it is a microscopic picture which is showing membranous organelles found in the cell and their functions. Basically, means what kind of function they are doing from transcription to protein formation. So here in the table we can see that we have right in this side we have name of membranous organelle, and right in the center we can see that what kind of function they are doing in the gene expression. So as we talk about nucleolus ranges in size from 0.5 to 8 micrometer, and it has round shape, and its basic function of the nucleolus is RNA transcription, processing, and ribosome assembly. So next, so I will be discussing about the function of amylose. So the first function of amylose is macromolecule biogenesis. Macromolecule biogenesis means they are going to be part of the phenomena that is going to product a macromolecule, that is ribosome or anything, speciosome. So nucleoli and causal body belong to a functional subgroup of amylose that contribute to the biogenesis of macromolecular machinery essential for gene expression. So I will be discussing about nucleolus. The nucleolus is the largest and most easily detectable amylose commonly observed in eukaryotic cells. Its role to ensure correct ribosome biogenesis, which sequentially involves pre-RNA transcription, modification and processing, and ribosome assembly. Nucleoli are formed at transcriptionally active rDNA loci, and their numbered size and vary depending on the cell type and condition, and is mainly correlated with level of pre-rRNA transcription by RNA polymerase I. The nucleolus is a phase-separated biomolecular condensate in which the protein are highly dynamic exchange with those in the surrounding nucleoplasm. So, तो nucleolus की अगर structure की बात करें तो nucleolus of mammalian cell is organized into layers, the FC, DFC and granular component. तो अभी अगले वाले फिगर में बात करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस का और उसका कैसे मतलब क्या रोल है. So this was not actually the review article. This is what I have drafted. So here in the figure 1 you can see that there is some region in the center that is called FC, that is fibril center. Fibril center consists of mRNA and inactive
use one in Jan. The DFC center, that is a dense fibril center, which contains pre-RNA and GC center. That the GC center formation here, you can see that GC center here is developed by the rRNA and R protein composition. तो अगर समझने की कोशिश करें कि न्यूक्लियोलस कैसे काम करता है, कैसे मतलब न्यूक्लियोलस राइबोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 और 22 में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है जहाँ पे न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। मतलब हमारी सेल में कुछ जगह है जहाँ पे न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है NOR, उसके पास rDNA होता है, राइबोसोमल डीएनए, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसके बाद जो है 45S RNA का फॉर्मेशन होता है। 45S RNA जो होता है इमेच्योर RNA होता है RNA। तो उसके बाद 45S RNA बन कैसे रहा है? RNA rDNA से क्या होगा, RNA पॉलीमरेज 1 उस पर एक्ट करेगा और उसके बाद जो है वो 45S rRNA का फॉर्मेशन कर देगा, which is very basic। तो 45S RNA उसके बाद वो स्प्लाइसिंग में जाएगा और उसके बाद वो जो फॉर्मेशन करेगा 28S RNA, 5.8S RNA और 18S RNA, इनका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। और जो हमारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम, जो हमारे राइबोसोम जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है वो 80S राइबोसोम है। 80S राइबोसोम में दो सब यूनिट, 60S और 40S। तो 60S जो सब यूनिट है उसके जो तीन वो जो बनता है वो तीन सब यूनिट से मिलकर बना, 3S RNA सब यूनिट से, 28S, 5.8S और 5S RNA। तो ये तीन RNA मिल जाएंगे और R प्रोटीन मिल जाएगा, उसके बाद मिलकर लार्जर सब यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज 60S। स्मॉलर सब यूनिट के लिए सिर्फ 18S RNA और R प्रोटीन लगता है, तो स्मॉलर सब यूनिट का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी मैं कैसा कि जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका सिंथेसिस जो होता है हमारे न्यूक्लियोलस में नहीं होता, क्योंकि जो इसके लिए rDNA की जरूरत जो होती है वो टेलोफेज में बनता है, तो वो उसका सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है कि rDNA है, उसने RNA पॉलीमरेज 3rd काम किया और उसके बाद उसने जो है 5S RNA का फॉर्मेशन किया। अभी ये 5S RNA जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में बना, यहाँ पे जब इसको जाना है न्यूक्लियोलस में, तो इसमें भी बहुत सारे जो एमिनोज हैं काम करते हैं, जो मतलब rRNA का ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं कि इसको यहाँ पे से न्यूक्लियोलस में भेजना है, इसको यहाँ से चलो आपको साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो इसमें ये सब भी काम करते हैं। तो 5S RNA क्या करेगा, फिर यहाँ पे से जब इसका फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो फिर ये न्यूक्लियोलस में ट्रांसफर होगा। वहां पे जाने के बाद यहाँ बात क्या है 5S RNA। अभी क्या होता है फिर कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन ट्रांसलेशन हो रहा है, राइबोसोम mRNA मिलकर प्रोटीन ट्रांसलेशन कर रहा है। तो राइबोसोम क्या करेगा कि वो मतलब प्रोटीन बना, प्रोटीन जैसे बना, R प्रोटीन फिर जाएगा न्यूक्लियस में और यहाँ पे जाने के बाद 5.5S RNA, 5.8S RNA, 28S RNA मिलकर क्या बना देंगे, लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट बना दिए, कुछ प्रोटीन मिलके फिर ये 18S के साथ स्मॉलर सब यूनिट बना दिए, तो बड़ा वाला सब यूनिट बन गया, छोटा वाला सब यूनिट बन गया। तो अब ये क्या होगा कि फिर यहाँ पे से ये दोनों सब यूनिट वापस जो है एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जब हमारा mRNA आ जाएगा फिर वापस से जो mRNA से पहले स्मॉलर सब यूनिट चुनेगी, फिर लार्जर सब यूनिट चुनेगी और उसके बाद फिर जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन और लास्ट में प्रोटीन फॉर्मेशन। सीज़ेल बॉडी was identified as a nuclear accessory body in neurons by the neurobiologist Ramon Seehal at the beginning of the 20th century. Seehal body contains multiple SNRPs complexes and the idea containing protein coil. The majority of Seehal body have role in biogenesis of SNRPs, which eventually form part of spliceosome. Spliceosome का फंक्शन आपको पता ही है। spliceosome क्या करता था कि जब mRNA बन गया, इंट्रॉन में
हेल्प बॉडी जो है बहुत मेजर फंक्शन करता है किस प्रोटीन का फॉर्मेशन की जरूरत है। The majority of your snRNAs are transcribed by coiled tube and nucleus. The assembly of core snRNAs occurs in cytoplasm, and core snRNAs return to the nucleus for modification and assembly into mature snRNAs. Sihan body are also involved in processing and export of pre-snRNAs. At the cytoplasm, snRNAs are bound with an assembling protein to form core snRNAs. The modified core snRNAs associated with snRNA associated protein to form splicing competent snRNAs. In addition to snRNA biogenesis, Sihan body are suggested to be involved in reassembly of snRNAs following splicing and snRNA degradation. मतलब Sihan body क्या कर रहा है? ये फॉर्मेशन में तो वो कर ही रहा है, साथ ही साथ डिग्रेडेशन SNRPs की डिग्रेडेशन में भी जो है Sihan बॉडी का काम कर रहा है। सो नेक्स्ट पहला तो हो गया मैक्रोमोलेक्यूलर बायोजेनेसिस। अभी दूसरा जो है फंक्शन उनका है जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन न्यूक्लियस स्पेकल्स PML, NPs, HLPs and P bodies domain are formal MLOs involved in the regulation of various steps of gene expression in the nucleus and the cytoplasm. तो न्यूक्लियर स्पेकल्स क्या करता है? न्यूक्लियर स्पेकल्स आर डिटेक्टेड एज डजन ऑफ न्यूक्लियर फोकाई विद heterogeneous size ranging from 0.3 to 3.0 micrometer and which various SNRPs, splicing factor and coiled transcribed RNAs are localized. The function of nuclear speckles remain ambiguous, with two functions having been proposed. First, nuclear speckles are proposed to be reservoir of RNA processing factor. This is based on the evidence that no DNA or active transcription was detected inside nuclear speckles, despite their enticement and various RNA processing factors. Second, in contrast to the first suggested function, nuclear speckles were proposed to be gene expression hub, which promote transcription and co-transcriptional processes such as splicing of speckles attached gene through the rapid recycling of factors in the phase separated nuclear speckles space. Second, PML nuclear body. PML NDs are specific spherical MLOs in mammalian cells, numbering 5 to 30 per nucleus, with a diameter of 0.1 to 1.0 micrometer, and which the tumor suppressor PML is concentrated. PML NDs have been suggested to be involved in various biological processes, including antiviral immunity, cell senescence, and tumor suppression. In acute promyelocytic leukemia, PML NDs are disorganized owing to the chromosomal translocation that creates an aberrant PML fusion oncogene. PML NDs physically associate with various chromosomal loci and contain several chromatin regulators, implying that they have potential role in chromatin regulation. In addition to their role in nuclear organization, PML NDs tend to localize near actively transcribed gene and potentially affect gene expression. Processing bodies. Processing bodies are rounded MLO 400 से 500 nanometer in size that are constitutively detectable in cytoplasm of various cell lines but not in budding yeast. P bodies are marked by protein involved in mRNA decay. तो हम देख रहे हैं जैसे कि मतलब जितने भी MLO है सबका मतलब बहुत मेजर फंक्शन नहीं है, लेकिन जो फंक्शन इनका जीन रेगुलेशन में कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एमआरएनए लिखे। अभी कैसा होगा कि अगर एमआरएनए सही नहीं बना, कोडिंग सही नहीं करेगा, फिर प्रोटीन सही नहीं आएगा, डिजीज फिर हो जाएगी, म्यूटेशन इसी से होगा। तो जो गलत एमआरएनए का बना है उसके डीके के लिए भी जो है एमएलओज ही मतलब काम करते हैं। They tend to be engaged in mRNA coding regulatory proteins that are translated at low levels. mRNAs found in P bodies have low GC content and contain specific rare codons that are inefficiently translated. P bodies are formed with multiple IDR containing proteins that promote LLPS
suggesting that they are phase separated MLOs. नेक्स्ट है हमारा टाइगर डोमेन, चौथा जो MLO है जो काम करता है जीन रेगुलेशन में. The tiger domain is a unique hybrid organelle composed of an MLO, the test granule and membranous organelle, the endoplasmic reticulum. Test granule are highly enriched and named after the RBP T1S1-1B and are located at surface of endoplasmic reticulum. The tiger domain consists of a mesh-like network of tubules with gel-like properties and selectively incorporates particular membrane protein mRNAs processing long 3' untranslated region. Alright, so here is the overview of all what I have spoken. We can see that nucleolus, what nucleolus is doing, RDNA का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, pre-RNA आया, न्यूक्लियोलस से प्रोसेसिंग करी और उसके बाद उसने जो है प्रोसेस RNA बना दिया. प्रोसेस RNA क्या करेगा, प्रोटीन के साथ मिलके सबयूनिट्स का फॉर्मेशन करेगा, लास्ट में जो है हमारा वो सबयूनिट्स राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगी. अब सेहल बॉडी क्या करता है, सेहल बॉडी क्या करता है, एसएनआरएनए जीन है, एसएनआरएनए जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्री एसएनआरएनए जीन बन गया. प्री एसएनआरएनए जीन को सेहल बॉडी क्या करेगा, उस पे काम करेगा और उसको जो है न्यूक्लियस से बाहर सबसे पहले भेजेगा और न्यूक्लियस से बाहर भेजेगा, वहां पे उसमें जो है असेंबली ऑफ कोर एसएनआरपीस, कोर एसएनआरपीस का असेंबली होगा, फिर वापस से वो इनसाइड आएंगे न्यूक्लियस के और वहां पे जो है मैच्योरेशन में उनके काम करेगा सेहल बॉडी और उसके बाद जो है लास्ट में मैच्योर जो एसएनआरपीस हैं वो स्पीसियोसोम्स के मेजर सेगमेंट हो जाते हैं और उसके बाद जो बाकी जीन रेगुलेशन में जो हमारे काम कर रहे हैं बेसिक मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स वो पीएमएल, न्यूक्लियस स्पेकल्स, न्यूक्लियस रेस्पॉन्डिव और पैरास्पेकल्स. उसके अलावा और भी जब जैसे ट्रांसलेशन हो गया तो ट्रांसलेशन के बाद भी कुछ एमएलओज हैं जो काम करते हैं उसमें एमआरएनए डीके और सारी चीजों के लिए वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए. सो नेक्स्ट, membranous organelles and disease. Morphologically, diversity of MLOs have been reported in various tumors and disease-related cells. In particular, remarkable variation in the number, size, or shape of nucleoli, sessile body, and TMLNBs have been well documented in various development cells. तो कैसा होता है कि जब हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में जब हम लोग देखते हैं सेल्स को तो बहुत सारे माइलोमास के केस में, बहुत सारे कार्सिनोमास के केस में क्या होता है कि जो एमएलओज हैं उनकी साइज एक सब चीज की हमारे सेल में हर चीज का एक रेंज है, मतलब नॉर्मल रेंज. उससे बहुत ज्यादा अगर नंबर बढ़ गया तो फिर तो कुछ ऐसा है कैंसर वैसे. तो बहुत सारी चीजों, बहुत सारे कैंसर के केस में देखा गया कि न्यूक्लियोलाई है उसका पेंडेंसेशन बहुत ज्यादा होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो भी जो है कैंसर का वो कारण बनती है. म्यूटेशंस इन जीन ऑफ की एमएलओ फैक्टर्स alter physical properties of the MLOs, which leads to the acquisition of toxic MLO functions or the functional loss of factors through aberrant process such as protein aggregation. Stress granules are associated with various diseases including cancer, viral infections, and neurodegenerative disease. Chromosomal translocation mediated formation of fusion protein comprising the DNA binding domain of transcription factor and the IDR or oligomerization domain of other protein promotes cancer, including Ewing sarcomas and leukemias. The enhancement or change of interactions of transcription related factors drives cancer development through the gene regulation. Alright, so emerging topics of future studies. In addition to the currently annotated MLO, an increasing number of cell type specific or stress inducible MLO have been reported, suggesting the existence of additional MLOs formed in specific cell type or in certain physiological or pathological condition. It was also recently noticed that even an annotated MLO
such as a stress granule, changes its protein composition in context dependent and disease specific manner, suggesting the possibility of component diversity in other MLOs that can bestow them diverse unexpected roles. Many MLOs exhibit a certain size and non-spherical shape that violates the feature of a typical liquid droplet formed by alveolus, suggesting the existence of additional mechanism underlying MLO assembly. The function of MLOs in gene regulation can be flexible, modulated by appropriate combination of modulators. The acquisition of aberrant biophysical properties leads to the alteration of MLO related gene expression, which is linked to various diseases, raising a new therapeutic concept of control of the biophysical property of penicillin. Further research regarding the molecular mechanisms controlling the biophysical properties of MLOs and their relationship to MLO function should provide significant insight into the mechanism and control of